स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां अवैध गतिविधियों के लिए मशहूर जिम खाना की तीसरी मंजिल को गिरा दिया गया। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां साबरमती फायरिंग व दोहरे हत्याकांड के 15 साल से फरार आरोपी पकड़े गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अहमदाबाद शहर के दरियापुर इलाके में स्थानीय पुलिस के संरक्षण में लंबे समय से जुए का अड्डा फल फूल रहा था। अब पुलिस और एएमसी की नींद खुल गई है। अवैध गतिविधियों के लिए मशहूर दरियापुर के मनपसंद जिमखाना की तीसरी मंजिल को गिरा दिया गया है। एसएमसी ने एएमसी को सबूत दिए थे कि अवैध रूप से फ्लोर बनाया गया है। उस समय एएमसी देर से जागी और इस क्लब की तीसरी मंजिल को गिरा दिया। इससे पहले एएमसी और क्राइम ब्रांच ने कई बार यहां छापेमारी की थी और तब भी जुआरी पुलिस के डर के बिना वहां जुआ खेल रहे थे। पिछले 2 वर्षों में मनपसंद जिमखाने पर 2 बड़े छापे पड़ चुके हैं और इस हाईटेक जुआ अड्डे से 200 से अधिक जुआरियों को जेल भेजा जा चुका है। अब इस मनपसंद जिमखाना को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस समय समय पर छापेमारी भी करती है, लेकिन क्लब के संचालक बिंदास इस क्लब को चला रहे थे और इस क्लब के कारण कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। मनपसंद जिमखाना की तीसरी मंजिल को संपदा विभाग ने ध्वस्त कर दिया है। मनपसंद जिमखाना अवैध गतिविधियों के लिए कुख्यात है। गोविंद खोड़ीदास पटेल मनपसंद जिमखाना के मालिक हैं। एसएमसी ने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि फर्श का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, जिसके बाद डीआईजी निर्लिप्त राय और डीएसपी के टी कामरिया की मौजूदगी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई और तीसरी मंजिल को गिरा दिया गया। सर, आज जॉन 4 के जरिए कार्रवाई की गई है दरियापुर विस्तार में, कौन कौन सी जगह पे डिमोलिश है? ये डीजीपी सर के आदेश अनुसार जो है एसएमसी ने एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें जो एसएमसी ने प्रीवियस रेड्स करी थी उसमें जो अपराधी थे उन अपराधियों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने जहाँ जहाँ पे जो है गैरकायदेसर जो है कंस्ट्रक्शंस किए थे उन सब कंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया है। और जहाँ जहाँ ये हमारे ध्यान पे आया कि कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है कि एनक्रोचमेंट है, तो वहाँ वहाँ हमने संबंधित जो है अधिकारियों को ये डिमोलिशन करने के लिए जो है आग्रह किया, उनको रिपोर्ट करी है और उसके अनुसार जो है आज अहमदाबाद में 3 जगह कार्रवाई। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद शहरी क्षेत्र में प्रबोध रावल ब्रिज के पास वर्ष 2009 में सरेआम फायरिंग कर हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पिछले 15 वर्षों से वांछित चल रहे 2 मुख्य आरोपितों को 2 धौलपुर और मुरैना से भेष बदलकर गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद शहर के साबरमती पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में आज से लगभग 15 साल पहले रात में बेसन की बिक्री को लेकर हुए विवाद के कारण सरेआम दोहरे हत्याकांड की घटना घटी थी, जिसके कारण साबरमती पोस्ट ऑफिस को बंद करना पड़ गया था। सरेआम फायरिंग कर इस अपराध को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी मुन्ना सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा और सह आरोपी सीताराम कुशवाहा घटना के बाद फरार हो गए हैं। एलसीबी जोन 2 टीम के केडी पटेल, हेड कांस्टेबल कल्पेश कुमार प्रेमजी भाई, प्रोफेसर कौंस चिराग जयराम भाई और एएलआर जांच के लिए रौनक कुमार जयराम भाई नाव को राजस्थान और मध्य प्रदेश भेजने वाली टीम ने लगातार 2 दिनों तक दोनों आरोपियों के आवासीय और कार्यस्थलों के आसपास दूध वाले, ट्रैक्टर चालक और फल ट्रक वाले फेरीवाले के रूप में काम किया। दोनों आरोपियों के बारे में विशेष जानकारी एकत्रित की, आरोपियों की पहचान की और दोहरे हत्याकांड में वांछित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2009માં ડબલ મર્ડરની એક ઘટના બની હતી। ઘટના એવી હતી કે જે આરોપી અને ફરિયાદી બંને એરપોર્ટની બહાર ચનાચોર વેચવાનું એ કામ કરતા હતા અને એ જે કામગીરી કરતા હતા એમાં જગ્યા બાબતે એ લોકોને માથાકૂટ થઈ। એ માથાકૂટના અનુસંધાનમાં 2 રિક્ષા ભરી અને પ્રબોધ રાવળ જે બ્રિજ છે એમાં ફરિયાદી અને એની સાથેના 2 એના સાળા જે મુકેશ પ્રજાપતિ અને શ્રીકાંત પ્રજાપતિ એનું ફાયરિંગ કરી અને ગોળી મારી અને 2ની હત્યા કરવામાં આવી હતી। એ 2009નો જે બનાવ હતો એમાં ટોટલ 14 જેટલા આરોપી હતા અને એમાં 6 આરોપીઓ જે તે વખતે જ પકડી લેવામાં આવ્યા હતા। પણ એનો જે મેઇન કલ્પ્રિટ કે જેણે ફાયરિંગ કર્યું હતું એ મુન્ના સિંહ કરીને એ પકડવાનો બાકી હતો। અત્રે અમારા સીપી સરની સૂચના અને નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ પકડવાની જે અમે ડ્રાઈવ શરૂ કરી એમાં જેટલા બહુ જ ગંભીર ગુનાના આરોપી અમારી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં હતા અને એના અનુસંધાનમાં અહીંયા અમારી એલસીબીની ટીમે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ આધારે આ મુન્નાની પહેલા એનું વેરઅબાઉટ્સ ક્યાં છે એ નક્કી કર્યું। અમને ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટન્ટમાં એવું ખબર પડી કે એ પંજાબ છે। એના આધારે અમે અહીંયાથી ટીમ રવાના કરી
એના સતત એના જે વેરઅબાઉટ્સ અમે મેળવતા રહેતા હતા. ત્યારે અમને ખબર પડી કે જે હોળીનો તહેવાર અને એના પછીનો જે સમયગાળો છે એ દરમિયાન એ એના પોતાના ધોલપુર ગામ ખાતે છે. હવે એ ગામની વસ્તી 1000 જેટલી, એટલે સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે કોઈ બહારનો માણસ આવે તો ત્યાંના લોકો એને ઇન્ફોર્મ કરી દે. એટલે અમારા જે પોલીસ સ્ટાફ છે એણે વિવિધ યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરી અને ગામમાં પહોંચ્યા અને આ બે જે મુન્નો અને જે સીતારામ કરીને જે છે એ આરોપીની અત્યારે અટક કરેલી છે. બીજું અમને એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે જે બાકીના પકડવાના છે એમાં 2 આરોપીઓનું મૃત્યુ થયેલું છે. તો હાલ અમે આ 2009નો જે એક આરોપી પકડી અને નાસ્તા ફરતાની જે ડ્રાઈવ છે એના હેઠળ આ કામગીરી કરેલ છે. અ 2 દિવસની આખી આ મહેનત હતી, કારણ કે જ્યારે 2009નો આરોપી હતો અને અમારો સ્ટાફ નવો છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે અમારી પાસે એના જે ફોટોગ્રાફ્સ હતા પણ એને આઈડેન્ટિફાય કરવો, કારણ કે 15 વર્ષ પહેલાનો ફેસ છે અમારી પાસે, એટલે એને આઈડેન્ટિફાય કરવો. એ એના ખેતરમાં જ હતો અને ખેતરમાં લોકેશન્સ એવા હતા કે જેથી કરીને દૂરથી જો તમે આવતા હોવ તો એને ખ્યાલ આવી જાય. એટલે અમારા જે માણસો છે એમણે ક્યાંક શાકભાજી વેચવા વાળાનું કામ કર્યું છે, ક્યાંક ટ્રેક્ટર ચલાવતા હોય એવું કામ કર્યું છે અને એ સમયગાળા દરમિયાન આને પકડેલો છે. એટલે જેટલી પણ પકડવા માટે યુક્તિ પ્રયુક્તિ થઈ શકે એ મારા એલસીબીના સ્ટાફે કરી છે. મૂળ મુદ્દો એવો હતો કે 22/10 રોજનો આ બનાવ છે, 2009નો. એ વખતે રાતે 1 કે 2 વાગ્યાની આજુબાજુ આ જે ચનાચોર વેચવાનું કામ કરે છે ફરિયાદી અને આરોપી બંને, એટલે એ મૂળ જગ્યા બાબતનો ઇસ્યુ હતો કે તારે અહીંયા વેચવું, તારે અહીંયા ન વેચવું. એ વેચવાનું પૂરું કરી અને 3 વાગે પ્રબોધ રાવળ જે બ્રિજ છે ત્યાંથી એ રિક્ષા લઈને ફરિયાદી અને એના 2 સાળા मुकेश प्रजापति ने श्रीकांत प्रजापति जे बन्ने। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।